Hello students, in this video I have my physics quantum classes going to solve the problems 11 to 15 of chapter 8 work and energy of the book Concepts of Physics part 1 written by Dr. C. Verma, which is video number 3 or part 3 of this chapter. For class 11 physics, IITJEE and NEET entrances and also plus 2 level entrances. इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम्स 11 टू 15 का सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 और वीडियो नंबर 3 है, जो कि क्लास 11 फिजिक्स के अलावा IITJEE, NEET entrances and अदर्स प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल। प्रॉब्लम 11 इज ए बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन नीड टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक having friction coefficient 0.2 with the box. Part A, find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal. Part B, find the work when the person has chosen a value of theta which is using the minimum magnitude of force. एक बॉक्स जिसका वेट 2000 न्यूटन है और उसे एक स्ट्रेट ट्रैक पर एक सीधे रास्ते पर 20 मीटर डिस्टेंस तक स्लोली स्लाइड कराया जाता है। स्लोली स्लाइड मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज 0, दैट इज द बॉक्स मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो चूंकि बॉक्स को स्लोली स्लाइड कराया जाता है, इसका मतलब बॉक्स यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड करता है। बॉक्स को यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड कराया जाता है, जिससे कि उसका एक्सेलरेशन 0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बॉक्स का सरफेस एंड स्ट्रेट ट्रैक, जो सीधा रास्ता है, सीधा पथ है, एंड बॉक्स का सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक 0.2 है। पार्ट ए में कैलकुलेट करना है, मालूम करना है वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विथ द होरिज़ोंटल। किसी पर्सन के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा बॉक्स को चेन की सहायता से होरिज़ोंटल से थीटा एंगल से पुल करने में, खींचने में कितना वर्क डन करना, कितना वर्क डन हो, इसे फाइंड करना है। वर्क डन को फाइंड करना है जब बॉक्स को कोई पर्सन चेन के हेल्प से होरिज़ोंटल से थीटा एंगल पर पुल करता है। एंड पार्ट बी में फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन ए वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ। तो उस पर्सन के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है जब वह पर्सन, वह आदमी एक पार्टिकुलर एंगल को चूज करता है, जिसके लिए, और वह इंश्योर हो जाता है उस एंगल को, उस पार्टिकुलर एंगल थीटा को चूज कर इंश्योर हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स मिनिमम। यह पार्ट बी में वर्क डन बाय द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा, उस आदमी के द्वारा वर्क डन
मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। जब वह एक पार्टिकुलर एंगल को चूज करता है तथा इंश्योर हो जाता है कि उस पार्टिकुलर एंगल थीटा के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय हिम ऑन द बॉक्स वह मिनिमम। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। गिवन weight of the box is 2000 Newton, that is mg. Weight of the box m into g, m multiplied by a small g, that is weight of the box, and it is given 2000 Newton। और इसे स्लोली धीरे धीरे स्लाइड कराया जाता है। कितने मीटर तक, कितने डिस्टेंस तक? 20 मीटर। एक सीधे रास्ते पर, एक स्ट्रेट ट्रैक पर 20 मीटर तक स्लाइड कराया जाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेट ट्रैक। बॉक्स का सरफेस एंड स्ट्रेट ट्रैक जो सीधा रास्ता है उसके सरफेसेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू इट इज आल्सो गिवन 0.2। बॉक्स एंड स्ट्रेट ट्रैक सीधा रास्ता है तो इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 है जो कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और ब्लॉक को स्लोली मूव कराया जाता है। इसका मतलब है कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन, बॉक्स का एक्सीलरेशन, ब्लॉक इन बॉक्स, तो बॉक्स का एक्सीलरेशन 0 होगा। दैट इज बॉक्स यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। स्लोली स्लाइड करने का मतलब है उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स इज 0। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स विल बी 0। क्योंकि बॉक्स को स्ट्रेट ट्रैक पर, सीधे रास्ते पर स्लोली स्लाइड कराया जा रहा है 20 मीटर डिस्टेंस तक, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कराया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में बॉक्स का एक्सीलरेशन a इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स विल बी 0। अब पार्ट ए में हमें मालूम करना है कि जिस स्ट्रेट ट्रैक पर बॉक्स को पुल किया जा रहा है तो उसे एक चेन के हेल्प से, उस बॉक्स को चेन के हेल्प से हॉरिजॉन्टल से, दिस इज हॉरिजॉन्टल मींस हॉरिजॉन्टल ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक जो सीधा रास्ता है जिस पर बॉक्स को खींचा जा रहा है फोर्स अप्लाई करके, वह रास्ता, वह स्ट्रेट ट्रैक ही हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? एक चेन की हेल्प से थीटा एंगल पर उसे पुल किया जा रहा है। तो एक चेन के हेल्प से बॉक्स को पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर उसे पुल किया जा रहा है थीटा एंगल पर। एंड फोर्स जो अप्लाई किया गया है वह मालूम नहीं। उस फोर्स को कैलकुलेट करना होगा पहले, तब उस फोर्स के द्वारा वर्क डन बाई दैट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब फोर्स हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है बॉक्स का, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर है। और यह एक चेन से बॉक्स को पुल किया जा रहा है। सपोज किया जाए कि दैट फोर्स इज F और वी कैन ऑल्सो से P। उस फोर्स को कैपिटल F हमने सपोज किया है, उसे कैपिटल P भी सपोज किया जा सकता है उस फोर्स को, जो कि एक चेन के हेल्प से बॉक्स को खींचा जा रहा है उस पर्सन के द्वारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉक्स पर जो फोर्स होगा वह फोर्स होगा F cos थीटा, एंड जो कि बॉक्स एंड स्ट्रेट ट्रैक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को F इज इक्वल टू म्यू इनटू n, दैट इज म्यू इनटू mg। weight of the box which is given 2000 Newton is balanced by the normal reaction of the straight track। weight का बॉक्स जो कि 2000 न्यूटन है mg, वह स्ट्रेट ट्रैक जो सीधा रास्ता है
उसके द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर अप्लाई किया जाएगा उससे उसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा वेट ऑफ द बॉक्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम जी, उस बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा F cos theta. Therefore, since there is no acceleration of the box, therefore resultant force on the box is 0. Therefore, we have F cos theta minus frictional force, that is a small f, which is mu mg, and mu mg is equal to n. Mg is balanced by n, so we can write it as mu n. Frictional force is directly proportional to normal reaction, and normal reaction of the straight track balances the weight of the block, which is 2000 Newton. So resultant force acting on the resultant force acting on the box in the horizontal direction is resultant force acting in the horizontal direction is F cos theta minus mu n, and since acceleration is 0, क्योंकि बॉक्स को स्लोली स्लाइड कराया जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। Therefore F cos theta equal to mu n. Therefore F cos theta, we can write F cos theta equal to mu into n. F cos theta equal to mu into n. Suppose it is equation number 1. In the vertical direction, for the vertical equilibrium of the box, we have one component of force, vertical component of force acting on the box, F sin theta, will act along the normal reaction, that is along the vertical upward direction, and weight of the block, that is mg, is equal to 2000 Newton, is acting downward. So for the vertical equilibrium of the box, we have n plus normal reaction of the track plus F sin theta, both are acting upward direction. स्ट्रेट ट्रैक के द्वारा, सीधा रास्ता, सीधा पथ के द्वारा, सीधा जो रास्ता है स्ट्रेट पाथ, उसके द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स पर अप्लाई हो रहा है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस इस फोर्स F जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जबकि F sin थीटा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉक्स के स्ट्रेट ट्रैक पर, सीधे रास्ते पर, स्ट्रेट पाथ पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स, दैट इज अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin theta will balance the weight of the box. So we have F plus F sin theta, both are acting vertically along vertically upward direction on the box, and it will balance the weight of the box, which is 2000 Newton. So it is equals to 2000 mg, and mg is equal to 2000 Newton. Now we have to find F. Then we will able to find work done by applied force we have taken. We have taken that applied force on the box is at making angle theta with the horizontal, which is given in the problem. So we have to find the value of F. Now reaction of the force is n can be, suppose it is equation number 2, that is n plus F sin theta is equal to 2000 Newton. इसे इक्वेशन 2 माना जाए। Therefore normal reaction, eliminating normal reaction from this equation, इस इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो n इक्वल्स टू 2000 न्यूटन माइनस F sin थीटा, F sin थीटा। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2a से हमने ऑब्टेन किया है। अब इस n का वैल्यू को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में, दैट इज F cos थीटा इक्वल टू म्यू n, तो हमें कैपिटल F का वैल्यू, दैट इज force by which the box is pulling at an angle theta with the horizontal, वह मालूम हो जाएगा। तो substituting this value of normal reaction in equation 1, that is F cos theta equal to mu n, we have in RHS of equation 1. So using 2a in equation 1,
इक्वेशन 1 में ये का वैल्यू किया जाए तो RHS में f cos थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू n इक्वल्स टू 2000 माइनस f sin थीटा. So म्यू n इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट n का वैल्यू 2000 माइनस f sin थीटा को ब्रैकेट के अंदर रखा जाए तो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 2000 माइनस f sin थीटा. नाउ अपने RHS में ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो म्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, रिमूविंग द ब्रैकेट इन RHS. तो वी शुड मल्टीप्लाई म्यू बाय 2000 इन द फर्स्ट टर्म एंड देन म्यू बाय f sin थीटा. तो म्यू को 2000 से मल्टीप्लाई करना होगा और म्यू को मल्टीप्लाई करना होगा फिर f sin थीटा से सेकेंड टर्म में. एंड सेकेंड टर्म में म्यू f sin थीटा होगा, उसको हम LHS में ले जाएंगे जिससे कि f कॉमन हो जाएगा. f cos थीटा LHS हो जाएगा f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा. RHS होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई 2000. म्यू का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.2, तो बाद में इसका वैल्यू यूज करेंगे. तो नाउ वी हैव f cos थीटा. नाउ वी कैन राइट फर्दर दिस इक्वेशन एज वी कैन राइट फर्दर और f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा माइनस म्यू f sin थीटा को RHS से LHS में लाया गया. म्यू f sin थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू 2000 इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई 2000. म्यू का वैल्यू रखा जा सकता है 0.2 और f को कॉमन कर लिया जाए LHS में. f का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा. f ब्रैकेट के बाहर है. f is taken out of the f is the applied force on the box, making an angle theta with the horizontal. So f is taken out of the bracket. f को ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो f cos theta अंदर ब्रैकेट cos theta प्लस inside the bracket it is mu sin theta equals to mu into 2000. नेक्स्ट स्टेप में हम म्यू का वैल्यू पुट कर दें और therefore f फोर्स का वैल्यू इससे हम लोगों ने फोर्स का वैल्यू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉक्स पर अप्लाई किए गए फोर्स का वैल्यू अब हम ऑब्टेन कर सकते हैं इससे विच इज f विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाई 2000 अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. अब म्यू का वैल्यू 0.2 प्रॉब्लम में दिया गया है. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सो वी कैन put the value of mu. Therefore, we have putting mu is equal to 0.2 in this equation. We have 0.2 multiplied by 2000 upon cos theta plus mu is equal to 0.2 sin theta in the denominator. This is the force applied on the box. And 0.2 into 2000 is 400. डिस्मल से एक 2000 का न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज 0.2 is 2/10, तो ये 0 डिस्मल से न्यूट्रलाइज हो गया. तो 200 into 2 that is we have 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta. And suppose it is equation number 3. तो हम लोगों ने फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉक्स का वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया. और जब फोर्स का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं. वर्क डन बाय द फोर्स इज F at angle theta when the force applied at angle theta to the direction of displacement or to the horizontal is W is equal to Fs cos theta. So work done by the force is now we have to calculate work done by the force in part A. We are solving part A of the problem. So work done by the force W is equal to Fs into cos theta, and F value of F is 400 plus cos theta plus 0.2 sin theta. So it is force is equal to 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta multiplied by S.
और बॉक्स को प्रॉब्लम में दिया गया है. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम that box is displaced through 20 meter. Box is slowly slid through distance 20 meter. So S is equal to 20 meter. Box को slowly खींचा गया है स्ट्रेट ट्रैक पर 20 मीटर डिस्टेंस. सो S is equal to 20. S का वैल्यू हमने रखा, क्वेश्चन 3 में हमने ऑब्टेन किया. अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉक्स कैपिटल F is equal to 400 plus cos theta plus 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta. And we have supposed it as equation 3. इसे हमने इक्वेशन 3 माना है, उसके लिए जो इक्वेशन है. So work done by the force at angle theta, work done by the force which is applied at angle theta to the horizontal is given by both the formula W equal to Fs cos theta and F is 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta multiplied by displacement S is 20 meter multiplied by cos theta. Now it is 400 into 20, it is 8,000. So we can write now in the next step as work done by the force, and then we get the final result. Or work done by the force W is equal to 400 multiplied by 20, that is 8,000 upon cos theta plus 0.2 sin theta, and in the numerator it is 400 multiplied by 20, it is 8,000 multiplied by also cos theta. So in the numerator it is 8,000 cos theta upon cos theta plus 0.2 sin theta. अब cos theta को अगर नीचे ला दें या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos theta से डिवाइड कर दें, तो उस इक्वेशन में we have total work done by the force W equals to 8,000 cos theta से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो we have in the numerator cos theta by cos theta कैंसिल हो गया 8,000 upon in the denominator which is cos theta by cos theta, that is 1 first term में, and in second term in first term cos theta by cos theta dividing cos theta by in numerator and denominator. Then we have cos theta in the numerator, in the first term cos theta by cos theta 1 plus 0.2 sin theta by cos theta. Second term में cos theta से डिवाइड करने पर 0.2 sin theta by cos theta, that is 0.2 tan theta. Now in place of so work done by the force applied on the box is work done by the force applied on the box is now W is equal to, we have obtained W is equal to 8,000 upon 1 plus 0.2 tan theta, and in place of 0.2 we can write 1 by 1 upon 5 in the second term of the denominator. So this is W, or we can write W equals to 8,000 upon 1 plus, in place of 0.5 is 1 by 5 into tan theta equals to in the denominator 1 plus 1 by 5 tan theta, denominator is 5, so we have 5 into 8,000 in the numerator. 5 ऊपर चलाएगा एलसीएम लेने के बाद अपॉन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो 1 plus 1 into 5, that is 1 into 5 is 5 plus tan theta, and it is now 8,000 multiplied by 5, that is 40,000. It is 40,000 upon 5 plus tan theta, and this is the answer of part A of the problem, that is work done by the applied force on the box, which is W equal to, final answer is W equal to 8,000 multiplied by 5 upon 5 plus tan theta, that is 40,000, 8,000 into 5, 40,000 upon 5 plus tan theta. And suppose it is equation number now, equation number, it is equation number 4.
In part B, we have to find the work done by the person has chosen a value of angle theta, particular value of theta, which is yours in the minimum magnitude of force. तो अभी सिचुएशन में जब वह पर्सन एक पार्टिकुलर एंगल चूज करता है थीटा, इसके लिए वह श्योर है, वह आश्वस्त है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स इज मिनिमम। वह आदमी, वह पर्सन एक पार्टिकुलर एंगल को चूज करता है, जिसके लिए वह इंश्योर होता है कि उस एंगल के लिए, उस पार्टिकुलर एंगल के लिए बॉक्स पर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो उस सिचुएशन में कितना वर्क डन किया जाएगा पर्सन के द्वारा, उसे कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय द पर्सन वी हैव टू कैलकुलेट। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम एंड we will use equation 3, that is in which we have obtained the value of force F equals to 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta. So for part B we have to use equation number 3, that is F equals to force we have obtained 400 upon cos theta plus 0.2 sin theta. It was equation number 3. We have already obtained it. Now for the minimum value of force for a particular angle which the person has selected, उस आदमी ने जो बॉक्स को खींच रहा है, उसने एक पार्टिकुलर एंगल को, खास एंगल को सेलेक्ट किया है एंड वह इंश्योर है, आश्वस्त है कि उस पार्टिकुलर एंगल के लिए फोर्स मिनिमम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो उस सिचुएशन में फोर्स जब मिनिमम होगा तो cos थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर के न्यूमरेटर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डिनोमिनेटर उसके लिए इक्वेशन 3 में मैक्सिमम होना चाहिए। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर वी हैव यूज्ड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, दैट इज d by d थीटा ऑफ cos थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। So for minimum value of minimum magnitude of force, cos theta, the value of cos theta plus 0.2 sin theta should be maximum. Therefore we have to apply the condition d by d theta of cos theta, क्योंकि cos theta plus 0.2 sin theta डिनोमिनेटर में है, जिसे हमने इक्वेशन 3 सपोज किया है। एंड वह पर्सन एक थीटा का एंगल का एक पार्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करता है, जिसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड वह इंश्योर है, वह आश्वस्त है कि उसके लिए, उस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम होने के लिए इस इक्वेशन 3 में F अपॉन 400 अपॉन cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा विच इज इक्वेशन 3। तो फोर्स न्यूमरेटर में है, उससे मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर जो टर्म है cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, उसको मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर के फोर्स मिनिमम होगा। जो कि न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर का जो टर्म है थीटा, जो थीटा को कंटेन करता है, cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा विल बी मैक्सिमम। And for maxima and minima, the condition is dy by dx is equal to 0. We know that the mathematics is differential calculus. So here it is d by d theta of denominator term in the denominator cos theta, terms in the denominator cos theta plus 0.2
sin theta, first term is cos theta and second term is 0.2 sin theta. So d by d theta of cos theta plus 0.2 sin theta and differentiation of d by d theta of cos theta plus 0.2 sin theta will be equal to 0. And differentiation of cos theta, we know that differentiation of cos theta is minus sin theta, or d by d theta of cos theta is minus sin theta plus d by d theta of 0.2 sin theta. Since 0.2 is constant, 0.2 constant there, so 0.2 multiplied by d theta of sin theta, and d theta of sin theta is cos theta, it is 0. So we have obtained minus sin theta after differentiation. We have obtained minus sin theta plus 0.2 into differentiation of sin theta is cos theta in second term, and differentiation of cos theta in the first term is minus sin theta. Or taking sin theta in RHS, minus sin theta in RHS, minus sin theta को RHS में कर दिया जाए. Therefore we have sin theta. We have now sin theta equals to 0.2 cos theta, or sin theta upon cos theta equal to 0.2, or tan theta equals to 0.2. This is the angle, that is tan theta is equal to, for tan theta is equal to 0.2, the magnitude of force applied by the person on the box will be minimum. So tan theta equal to 0.2, and suppose it is equation number 5. Now putting tan theta is equal to 0.2, for which the magnitude of force will be minimum. So putting the value of tan theta in the equation of work done by the force in part A, that is W is equal to 40,000 upon 4 plus tan theta. So substituting tan theta or putting tan theta is equal to 0.2 in that equation, that is equation number 4. So putting tan theta equals to 0.2 in equation 4, which is work done by the force applied by the person on the box in part A of the problem, which we have obtained. W is equal to 40,000 upon 5 plus tan theta. So putting tan theta barabar 0.2 in equation 4 of part A, we have W equals to 40,000 upon 5 plus tan theta is 0.2, and it is now 40,000 upon 5.2. Now we have 40,000 upon 5.2. After dividing 40,000 by 5.2, we can obtain the value nearly equal to 7,692 joule, that is nearly 7,700. The value we will obtain after dividing 40,000 by 5.2. न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है. 40,000 multiplied by 10 upon 52, and then we will get after dividing we get 7,692 joule. 7,692 joule, nearly 7,700 joule. So answer is work done by the person in pulling the box for a particular angle, which is tan theta is equal to 0.2, for which the magnitude of force will be maximum, and in that case work done by the person will be 40,000 upon 5.2, that is 7,692 joule. Answer. This is the answer of part B of this problem. Now problem 12 of chapter 8, work and energy of
SC Burma book, number 1. The problem is a block of weight 100 Newton is slowly slid up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meters over the incline. If the driving force is part A parallel to the incline, incline plane के पैरेलल है पार्ट ए में the driving force, and in part B in the horizontal direction. पार्ट बी में तो ब्लॉक जिसका वेट 100 न्यूटन है उस पर फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन पर है और उसे 2 मीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में उस ब्लॉक पर फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगाएगा एंड सेकेंड इक्वेशन में उस ब्लॉक पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। तो दोनों सिचुएशन को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन sketch diagrams for both cases. In first case, suppose AB is an inclined plane which is a smooth, that is frictionless. Inclined plane frictionless. कोई ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच, न समतल के बीच, झुका हुआ तल के बीच कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा जो ब्लॉक के अपवर्ड मोशन को अपोज कर सके। और ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा इंक्लाइन प्लेन से होकर, एंड वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन. It is given weight of the block mg equals to 100 Newton. Inclination of the inclined plane theta with the horizontal is 37 degree. This is 37. Inclined plane सपोज किया जाए AB है, इसका इस inclined plane का जो कि स्मूथ inclined plane है, इंक्लाइन सरफेस जो इंक्लाइन प्लेन है वह स्मूथ है, दैट इज फ्रिक्शनलेस है। तो इस इंक्लाइन प्लेन एबी का हॉरिजॉन्टल बीएस के साथ सपोज किया जाए के साथ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। हमने इंक्लाइन प्लेन एबी सपोज किया है जिस पर की बॉक्स एक है जिसका वेट 100 न्यूटन है, एंड इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से प्रॉब्लम में दिया गया, इसे सपोज नहीं करना है, प्रॉब्लम में इट इज गिवन 37 डिग्री. Weight of the block is 100 Newton, mg is equal to 100 Newton. It is acting vertically downward, and it will be balanced by the component, vertical component of this force, that is weight, that is 100 Newton cos 37, which will act perpendicular to the inclined plane against the normal reaction. Normal reaction of the incline will act vertically upward, but normal to the incline. Normal reaction is perpendicular to the inclined plane AB, not to the horizontal, and it will balance the vertical component, one component of the weight of the block, which is 100 Newton cos 37 degree, and another component of the weight of the block moving up over the inclined plane by applying an external force, and that force is, suppose that force is F, force applied on the block to move the block up on the incline, and in first equation part A the force is parallel to the incline. यहाँ पर फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक पर सपोज किया जाए, ब्लॉक सी है उस पर एक्ट करता है लेकिन वह इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, और वह फोर्स स्लोली, मतलब जो वह फोर्स 100 न्यूटन का जो वेट का जो ब्लॉक है उसको इंक्लाइन प्लेन पर स्लोली ले जा रहा है, दैट इज
The block is moving upward by the external force. Say that force is that pulling force is capital F. We can also take it P. And the block is moving up with uniform speed because the block is moving up slowly. क्योंकि ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, और इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग फोर्स अप्लाई कर या ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाकर, दोनों सिचुएशन में धीरे धीरे स्लाइड मतलब उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, इसलिए ब्लॉक का स्पीड यूनिफॉर्म होगा एंड एक्सेलरेशन उसमें जीरो. So acceleration of the block in both cases, in part A and part B, will be zero. And the displacement of the block in both cases is 2 meter. Displacement of the box by the force is 2 meter. So since the block is moving up without acceleration, the block is slowly slid up on a smooth horizontal plane, say AB of inclination 37 degree with the horizontal. Therefore, the resultant upward force on the block along the incline is zero. Therefore, another component of weight, that is 100 Newton sin 37, will act downward along the incline. 100 Newton sin 37 degree, another component of weight का अंदर कंपोनेंट है जो कि बॉक्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा, जबकि ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन पर एक्ट करने वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है 100 cos न्यूटन cos 37 डिग्री, यह इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसके द्वारा बैलेंस होता है. लेकिन 100 sin 37 डिग्री का 100 sin 37 डिग्री दैट इज वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अनदर कंपोनेंट 100 sin 37 डिग्री, वह डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कि बॉक्स को नीचे की ओर स्लाइड करने का प्रयास करेगा. लेकिन क्योंकि फोर्स F अप्लाई करके बॉक्स को इस फोर्स को ओवरकम करते हुए बॉक्स को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है. And upward direction में acceleration भी zero है. Therefore, resultant upward force on the block will be zero. Therefore, we have in the first case we have resultant upward force on the block is zero. That is F force minus F upward है, inclined plane के along 100 sin 37 downward है. तो net लेकिन बॉक्स जो कि ऊपर खींचा जा रहा है, therefore F will be greater than 100 sin 37. So resultant force on the block will be F minus 100 sin 37 and F minus 100 sin 37 degree equals to resultant force is zero. Resultant force is mass into acceleration. Acceleration is zero. So F equals to 100 sin 37 degree. The upward force on the block will balance this force, downward force, 100 sin 37. In this case, F is equal to 100 sin 37 degree. Suppose it is equation number 1. Therefore, work done by the force, driving force, F. So, work done by the driving force is F S into cos theta. Theta is 0. Box is pulling up. Force applied on the box is upward along the incline, and box is also moving up. Therefore, angle between force and displacement is 0. So, W work done by the force in this case, when the force is applied along the incline, is W is equal to F S cos 0 degree, and F is equal to 100 sin 37 degree. By using equation 1, in place of F we can write 100 sin 37 degree multiplied by S. Displacement of the box, displacement of the block is here. C is a block, not a box. Box was in the previous problem.
place of block. So W is equal to F is replaced by 100 sin 37 degree. We have obtained it because resultant force on the box is 0. Therefore, acceleration of the upward acceleration of the block is 0. Therefore, F is equal to force equal to 100 sin 37 degree. F is replaced by 100 sin 37 multiplied by S is 2 meter and cos 0 is equal to 1. Now 100 into, it is 100 into 2, that is 200 multiplied by sin 37 is 3 by 5. So it is now in place of sin 37 degree we have written 3 by 5. Sin 37 degree की जगह 3 by 5 हो गया, 100 into 2 200 हो गया और 0 degree is 1 and 205 से कैंसिल हो गया, 105 जा sorry 45 जा 200. So it is 40. 205 से कैंसिल होकर के 40 हो गया and 40 into 3 that is 120. It is 120 done. Answer. So in the first case, when the driving force is acting on the block parallel to the incline, then work done by the person in moving the block to a distance 2 meter up, that is along the incline, is 120 joule. It is unit of work is joule, not Newton. Unit of force, SI unit of force is Newton. Here W is equal to 120 joule. Answer. Sorry for that. Now in part B of this problem, the driving force is applied. Driving force applied on the block on a which lies on a which lies on a smooth inclined plane. The driving force is not along the incline, but it is in the horizontal direction. We can sketch it, the diagram of this case. The force applied, driving force applied on the block is now in the horizontal direction, but the force still is acting on the block which moves through distance 2 meter over the incline. यहाँ भी सेकेंड सिचुएशन में भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन में केवल डिफरेंस है. और फोर्स एक्ट करता है किसके लॉन्ग, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ब्लॉक पर जो फोर्स है अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो यहाँ पर भी जो अब यहाँ पर जो एंगल होगा, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल 30 है तो यह भी 30 हो जाएगा. ये इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी इंक्लाइन प्लेन का अब फोर्स के डायरेक्शन से एंगल कितना होगा, 30 होगा. इसलिए अब इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो फोर्स होगा अब एक फोर्स ना होकर F cos 30 होगा. The force is now F cos 30 which acts along the incline in the upward direction. Due to this force the body is pulled up. अब ब्लॉक कैपिटल F ड्राइविंग फोर्स के द्वारा ऊपर नहीं जाएगा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर. अब F cos 30 फोर्स के कारण ब्लॉक ऊपर मूव करेगा 2 मीटर डिस्टेंस एंड 100 न्यूटन साइन थीटा the horizontal component of the force, one component of the weight of the block, 100 Newton sin 37, will still act in the downward direction along the incline. तो इस ब्लॉक का वेट कितना है, 100 न्यूटन है, W इक्वल टू mg एंड इट इज mg इज इक्वल टू 100 न्यूटन. तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, तो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वेट का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वेट का नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, और यह एंगल भी कितना है 37 होगा और वेट का इस कंपोनेंट से इंक्लिनेशन भी 37 होगा. तो दैट इज 100 न्यूटन cos 37 डिग्री. तो दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स 100 cos 37 will be balanced by the normal reaction of the surface, but 100 sin theta is still acting downward on the block
and the driving force is now F cos 30, F cos 37. The inclination of the inclined plane is 37 degree, not 30 degree. Sorry for it. It is 37 degree given. So force is applied in the horizontal direction. ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, F cos 37. अब चूंकि हमें वर्क डन बाय द फोर्स मालूम करना है, फोर्स तो इस प्रॉब्लम में दिया नहीं गया है, तो और चूंकि बॉडी को स्लाइडली बॉडी को स्लाइड कराया जा रहा है फोर्स अप्लाई करके. अब यहाँ पर फोर्स F cos 37 डिग्री का फोर्स बॉडी को ऊपर की ओर स्लाइड कराएगा, लेकिन स्लोली करा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0 होगा. तो यहाँ पर भी अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइन यहाँ पर एक बार फिर से 0. Therefore, resultant force acting on the block will be 0, that is F cos 37 degree minus 100 sin 37 degree, क्योंकि 100 sin 37 डिग्री नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो इक्वल टू 0. Therefore, F cos 37 degree इक्वल टू 100 sin 37 degree. So work done by the force is now F cos 37 degree multiplied by S, and in place of cos F cos 37 degree we can write 100 sin 37 degree, because there is no acceleration, upward acceleration of the block. The block is slowly slid up on the smooth surface. So in part B we can write in place of F cos 37 degree we can write 100 sin 37. So in part B, for the horizontal, if the force driving force acting on the block in the horizontal direction, when the driving force say capital F is applied on the block in the horizontal direction, the body will be pulled up by the force. Now force component of this force along the incline, horizontal direction में force है, इसका component incline plane के along F cos 37 होगा, उसके द्वारा pulled up होगा, न कि horizontal force, न कि फोर्स जो कैपिटल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है उसके द्वारा. तो एक cos 30 के द्वारा 37 डिग्री के द्वारा वह ब्लॉक का ऊपर की ओर खींचा जाएगा जब ब्लॉक पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. So when the force driving force say is applied on the block in the horizontal direction, then horizontal direction, then component of this force acting which will pull the block up along the incline will be F cos 37 degree. So as the block is slid up on the smooth inclined plane slowly, so acceleration of the block is 0, so upward acceleration of the block is 0. Therefore the resultant upward force is also equal to 0. Therefore we have F cos 37 minus 100 sin 37, which is one of the components of the weight of the block, which acts downward along the incline 100 sin 37 degree. So F cos 37 component of the force acting on the block in the upward direction along the incline. So F cos 37 minus 100 sin 37 is equal to 0, because acceleration of the block is 0. Therefore F cos 37 is equal to 100 sin 37 degree. Therefore work done by the force, that is force means component of force F cos 37 is W. Work done by the this component of the force F cos 37 is F cos 37 degree into S, and in place of F cos 37 we can write 100 sin 37. So it is 100 sin 37 degree multiplied by S. Distance through which the body is moved up is 2 meter. The distance through which the body is moved up the incline is 2 meter. तो फोर्स के द्वारा
F cos 37 डिग्री के द्वारा भी, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके द्वारा भी ब्लॉक 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर से ही पुल किया जाता है ऊपर की ओर. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर, एंड इन प्लेस ऑफ F cos 37 we have written 100 sin 37. So it is S is equal to 2. Sin 37 is 3 by 5, so it is sin 35 in place of sin 37. Sorry, the value of sin 37 degree. The value of sin 37 degree is 3 by 5, so it is 3 by 100 multiplied by 3 by 5 multiplied by 2, and 5 is the 100 is cancelled by 5. That is 25 ja 100, so it is 20. 20 multiplied by 3 into 2, 20 into 3 it is 60 multiplied by 2, that is 120. So again work done by the applied force, that is a component of the applied force, horizontal force. F cos 30 is again 120 joule in part B also. Part 1, in part A, work done by the force but along the incline, in the upward direction along the incline, was also 120, and in this case it is also work done by the force on a component of the horizontal force F cos 37 in pulling the block 2 meter over the incline is also 120 joule. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा है, जो कि पार्ट ए में था, या पार्ट बी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन उस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर 2 मीटर डिस्टेंस से ऊपर की ओर मूव कराने के लिए, या ऊपर की ओर ब्लॉक को मूव कराने के लिए वर्क डन दोनों सिचुएशन में सेम होगा. दैट इज जो कि हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में बोथ पार्ट्स में, पार्ट ए में भी 120 जूल वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन, एंड वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, which is also 120. Problem 13 is find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed of the car is 72 km per hour. एक कार जिसका मास द्रव्यमान 500 kg है, उसे 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रोक दिया जाता है, जबकि कार का इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है. कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, गिवन है. तो उस कार को 25 मीटर डिस्टेंस में रोकने में कितना फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी, उसे कैलकुलेट करना है. कितना एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी, कितना औसत घर्षण बल उस कार पर क्रियाशील होगा, एक्ट करेगा, कितने औसत घर्षण बल की जरूरत होगी, कितने एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी, उसे मालूम करना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड एफ. Now, solution of this problem. It is given mass of the car m equals to 500 kg. Initial speed of the car, symbol of initial speed is u. कार की प्रारंभिक चाल u is equal to 72 किलोमीटर पर आवर, एंड इसे कन्वर्ट कर लिया जाए मीटर पर सेकेंड में, एसआई यूनिट में और इनकेस यूनिट में. दैट इज 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आवर इज 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, एंड 18 4 जा 72 18 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, एंड नाउ 4 into 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एंड इन मीटर पर सेकेंड इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार is 25 meter. S is equal to 25 meter. We have to find the average frictional force needed to stop the car. F is equal to what? Average frictional force needed to
stop the car, F equals to what? First of all, we have to find retardation of the car using the formula of uniformly rectilinear accelerated motion. V square minus U square is equal to 2as. We can obtain the formula for retardation in this case. Symbol is same, that is a small a, which is also used for acceleration. Retardation and acceleration का formula, acceleration का symbol स्मॉल ए ही यूज किया जाता है. रिटार्डेशन में माइनस साइन, जबकि एक्सेलरेशन में पॉजिटिव साइन. सो ए रिटार्डेशन ऑफ द कार ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s यूजिंग द फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. v is 0, final speed of the car is 0. v is 0 because car is stopped in a distance of 25 meter. 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कार को रोक लिया जाता है. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार v इक्वल टू 0. सो v स्क्वायर मींस 0 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी. u स्क्वायर इज इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज इन मीटर पर सेकंड 20. इट इज 20 स्क्वायर. u स्क्वायर इज 20 स्क्वायर. सो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल्स अपॉन 2 into s. s is 25 meter. s is 25 meter distance covered by the car when the car is stopped. So a equals to retardation of the car is 0 square minus 20 square is minus 400 square. Sorry, minus 400. 20 square is 400 and it is minus before 400. So 0 square minus 20 square, that is 0 square minus 400 is equal to minus 400 upon 2 into 25, that is 50 in the denominator. So 50 0 से 0 कैंसिल हो गया और सीधे 5 into 8. ऐसे भी 50 times 8 is 58 is 400. So it is minus 8 meter per second square. Retardation of the car is small a. Retardation of the car is minus 8 meter per second square. Now we have to calculate average frictional force needed to stop the car. F is equal to we have to calculate F. We know that from the Newton's second law of motion, F is equal to force is equal to mass into acceleration. Here in place of acceleration there is retardation. So it is now F equals to mass multiplied by a, m into a. We will obtain the average frictional force needed to stop the car. So using Newton's second law of motion, we have F equals to average frictional force needed. F equals to m into a. Mass of the car is 500 kg and a is the retardation of the car, which we have already obtained, minus 8 meter per second square. Retardation of the car is minus 8 meter per second square. So it is 500 into minus 8. F equals to m into a. And it is 8 into 500 is 4,000. 4,000 minus 4,000. Minus 4,000 Newton answer. Negative sign shows retarding force. That is frictional force acting on the car to stop it. So average frictional force needed to stop a car is minus 4,000 Newton. And this is the answer of this problem. इस प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता था. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. सो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आल्सो. सो alternate method, another method, alternately we can solve it by work energy theorem. That is work done W is equal to F into S equals to change in kinetic energy, that is half mv square minus half mu square. A is 0, final velocity is 0, so it is half m common कर सकते हैं. RHS में half m v square minus u square और वर्क डन इज इक्वल टू F into S. F हमें कैलकुलेट करना है जो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है. देयरफॉर F इक्वल्स टू
therefore f is equal to 1 by 2 m 1 by 2s multiplied by inner numerator it is m by 2s. Now it is m by 2s multiplied by 0 square minus u is initial speed is 20, final speed is 0. So it is m is equal to 500 kg upon 2, s is 25 and minus 20 square, 0 square minus 20 square minus 400, that is minus 400 it is. Now it is 500 कैंसिल हो गया 25 से 20 और 2 से 20 भी कैंसिल हो करके 10 हो गया, तो माइनस 400 इंटू 10 दैट इज we have obtained minus 400 into 10, that is minus 4,000. 10 into minus 400, so it is minus 4,000 Newton. And minus sign indicates the opposing force, that is the average friction force acting on the car is to stop it is F equals to average friction force is minus 4,000 Newton, जो कि हमने वर्क एनर्जी पावर के हेल्प से भी ऑब्टेन किया और इक्वेशन ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके भी F इक्वल टू minus 4,000 न्यूटन एवरेज फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया गया. नाउ प्रॉब्लम नंबर 14, फाइंड द एवरेज फोर्स needed to accelerate a car weighing 500 kg from rest to 72 km/h in a distance of 25 मीटर. अब यहाँ इस प्रॉब्लम 13 का रिवर्स प्रॉब्लम, वहाँ रिटार्डेशन था, यहाँ पर ब्लॉक को कार को एक्सलेट करना है और एंड कार का मास उतना ही है 500 kg. तो इट इज गिवन मास ऑफ द कार m इक्वल टू 500 kg. 500 kg का एक कार है, इसे 25 मीटर के डिस्टेंस में रोक दिया जाता है. 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 25 मीटर डिस्टेंस तक इसे एक्सलेट करना है. फर्स्ट प्रॉब्लम में इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में था 25 मीटर डिस्टेंस में रोक दिया जाता है और इसे 25 मीटर रेस्ट से विरामावस्था से कार को 72 km/h का स्पीड देकर एक्सलेट किया जाता है 25 मीटर डिस्टेंस तक. तो 25 मीटर डिस्टेंस तक एक्सलेट करने में इनिशियल स्पीड 0 से 72 km/h स्पीड से के साथ फाइनल स्पीड के साथ, तो 25 मीटर तक डिस्टेंस कवर कराने में मतलब उसे कार को एक्सलेट करने में कितना एवरेज फोर्स की जरूरत होगी यह कैलकुलेट करना. सो m इक्वल टू 500 kg, u इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 0, फाइनल स्पीड ऑफ द कार v इक्वल टू 72 km/h and it is again 72 multiplied by 5 by 18 meter per second, that is again 20 meter per second. अभी हमने ऑब्टेन किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में 13 में 72 km/h, 1 km/h is 5 by 18 meter per second, so 72 km/h is 72 multiplied by 5 by 18 meter per second, so 72 km/h is 20 meter per second and distance covered by the car is 25 meter. 25 meter डिस्टेंस तक मूव कराकर कार को एक्सलेट करना है. इनिशियल स्पीड 0 से फाइनल स्पीड 72 km/h होने पर एंड एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है. तो पहले यहाँ पर फिर से हम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरफ प्रीवियस प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम 13 के सिमिलर ही यहाँ पर भी कार का एक्सेलेरेशन ऑब्टेन करना होगा. पिछले प्रॉब्लम में रिटार्डेशन कार का हमने ऑब्टेन किया था, वो एक्सेलेरेशन फॉर्मूला सेम है. तो एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज फोर्स दैट इज F equals to y, but acceleration of the car using the formula v square minus u square equal to 2as. Equation of uniformly directed linear accelerated motion संरूप कर लीजिए त्वरित गति का समीकरण v square minus u square equal to 2as का हेल्प कर a equal to v square minus u square upon 2s and v final velocity is 72 km/h, that is 20 meter per second square. 20 square minus u, initial speed was of the car was 0, so 0 square u square is 0 square upon 2. s is equal to 25 meter distance पर मूव कराना है कार को.
25 मीटर तक डिस्टेंस तक एक्सीलरेट कराना है. That is 20 square is now 400 minus 0 square is 0, so 400 minus 0 is 0 upon 2 into 25 is 50, and 50 8 ja 400, so it is acceleration of the car is 8 meter per second square. It is 8 meter per second square. Now we have to find the average force needed to accelerate the car. Using Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. So mass of the car is 500 kg. So एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट द कार. कार को एक्सेलरेट करने में एवरेज फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू मास ऑफ द कार m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार स्मॉल m. यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बल बराबर द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई गुना कार का त्वरण. F इक्वल्स टू 500 multiplied by A, acceleration of the car is, we have obtained it 8 meter per second square. So 500 into 8, that is 8 into 500, that is 4000 Newton. Answer. So average force needed to accelerate the car is F equals to 4000 Newton. It is positive. Force is positive because एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द कार. प्रीवियस प्रॉब्लम में F निगेटिव आया था क्योंकि वहाँ पर एवरेज फ्रिक्शन फोर्स, वहाँ रिटार्डेशन था कार में, तो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत थी -4000 न्यूटन का कार को रोकने के लिए. यहाँ पर कार को एक्सेलरेट कराने के लिए 25 मीटर डिस्टेंस तक एक्सेलरेट कराने के लिए इनिशियल स्पीड 0 से फाइनल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर तक एक्सेलरेट कराने में जब कार का मास 500 kg है तो फोर्स, एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट द कार, औसत बल की जरूरत होगी कार को त्वरित करने में, एक्सेलरेट करने में, वो F इक्वल टू 4000. इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम 13 के जैसा ही वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन by the force W is equal to F into S is equal to half mv square minus half mu square. There mu square is 0 because initial kinetic energy is 0 because initially the car was in rest. So केवल final velocity, only final velocity will be needed. That is final kinetic energy, half mv square. So we can obtain it. We can obtain or we can solve this problem by using work energy theorem also. Work done by the force by the average force in F into S is equal to the change in kinetic energy, that is half mv square minus half mu square. तो initial speed 0 है तो initial kinetic energy भी 0 होगा, that is 0, half mu square is 0. Therefore F is equal to mv square upon 2s. M is 500 kg. That is final velocity is 20 meter per second square. 20 square upon 2 and s distance covered by the car. जितने डिस्टेंस तक कार को एक्सेलरेट किया गया है, कार को त्वरित किया गया है, जितने डिस्टेंस तक वो डिस्टेंस 25 है. That is 25. 2 into 25. That is डिनोमिनेटर में 2 into 25. That is 50. 50 से 500 कैंसिल होकर के न्यूमरेटर में 10. 10 multiplied by 20 square. 20 square is 400. 400 multiplied by 10, that is 400 meter. Answer. That is average force needed to accelerate the car to a distance in a distance of 25 meter with final speed 72 km per hour, that is 20 meter per second. Again it is 400 multiplied by 10, that is 4000 meters. Answer. This is alternate method, that is using work energy. Problem 15
15 is a particle of mass small m moves on a straight line with its velocity varying with distance traveled according to the equation v equals to a root x, where small a is a constant. Find the total work done by all the forces during a displacement x equals to 0 to x equal to small d. स्मॉल m मास का एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा पर, सीधी रेखा में मूव करता है. इसका वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ वैरी करता है, चेंज करता है. इसे इक्वेशन v इक्वल्स टू स्मॉल a रूट x द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जहां स्मॉल a एक कांस्टेंट है. तो ऑल फोर्सेस के द्वारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक, स्मॉल d तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में ऑल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है. वी कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड्स. फर्स्ट बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड another method by using Newton's second law of motion to calculate force, to obtain force F equals to mass into acceleration by obtaining acceleration of the particle, and then using the formula of work done, W is equal to force multiplied by distance. But I am going to solve it by using work energy theorem. So, using work energy theorem, W equals to change in kinetic energy, that is 1 by 2 mv square minus mu square, or half mv1 square, half mv2 square minus half mv1 square. v1 is the initial speed of the block of the particle, v2 is the final speed of the particle, or u is the initial speed of the particle, or v is the initial speed of the particle. So 1 by 2 mv square minus mu square. But velocity is given in this problem by the relation v equal to a root x. So initially when the distance x is equal to 0, then velocity is 0 also. But when distance x is small x is a small d, then velocity of the particle is given by a root under small d, which is the final velocity of the particle. So work done is equal to 1 by 2 m. M can be taken out of the bracket. So 1 by 2 m under bracket v square minus u square, or 1 by 2 m v2 square, that is final velocity square minus initial velocity square. So W is equal to work done is equal to change in kinetic energy of the particle, that is 1 by 2 m under bracket v square, that is final velocity at displacement x is equal to d. So it is a final velocity a root under small d square minus u square, initial velocity when displacement of the particle x is equal to 0. The particle का displacement x is equal to 0 है, तो उस particle का initial velocity होगा v equal to a root 0, that is 0, that is initial velocity. In place of u we can write 0 square, and it is 1 by 2 m. M is the mass of the particle, which is a small m. It is given in the problem. So it is, now we have 1 by 2 a small m multiplied by a under bracket a small a root a small d square is equal to a square into d. A square multiplied by a small d minus 0 square is 0. 0 square is the initial kinetic energy. Since initial speed of the particle is 0, so initial kinetic energy, initial speed of the particle is 0 when x is equal to 0. So initial kinetic energy of the particle half m into u square, that is half m into 0 square, will also equal to 0. So it is 1 by 2 m small m multiplied by root and multiplied by under bracket a root b square is a square into b minus 0, 0 square is 0, and therefore work done by all forces, that is W all forces के द्वारा is equal to 1 by 2 m
multiplied by a square t minus 0, that is a square t, a square t. So it is works done by the all forces during the displacement of the particle from x barabar 0, initial displacement, to the final displacement, x is equal to a small d 1 by 2 ma square into d, or we can write it as ma square multiplied by d by 2. Answer of this problem. तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट इसे अल्टरनेटली अनदर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. उसके लिए अल्टरनेटली वी कैन सॉल्व इट to find the acceleration of the particle given by a is equal to v square minus u square upon 2s, and in place of s, total distance covered by the particle is from x barabar 0 to x barabar 3 small t. So it is v is when v is the final velocity when displacement of the particle is equal to 0. जब particle का displacement x बराबर v है तो velocity कितना है? v equal to a into root under d square, that is v square. In case of d square we can write a square into d. Finally a into root d square is a square into d minus u x. When x is equal to 0, velocity of the particle is 0, so it is 0 square upon 2s. So we have a square t minus 0 square by 2s, that is acceleration of the particle, where a small a is constant. In RHS a small a is constant, and a small a in LHS is acceleration of the particle. Acceleration of the particle. Small a is a square, we get a square d upon 2s. Therefore work done by all forces, W all is equal to force multiplied by distance, and distance is total distance of the particle from x barabar 0 to x barabar d is a small d, so f into a small d, and f is a square d upon 2, and s is also d, the distance covered by the particle between during the displacement x barabar 0 to x barabar d. So s is replaced by, s is the symbol of distance, s is replaced by a small d. s की जगह पर हमने डिस्प्लेसमेंट d रखा, क्योंकि d सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x बराबर 0 से x बराबर d तक कितना होगा? टोटल स्मॉल d होगा. सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज W all is equal to f multiplied by d, and f is force is mass into acceleration. Here we have obtained the acceleration a is equal to a square d upon 2d. So force is equal to mass multiplied by acceleration. So mass multiplied by mass small m multiplied by acceleration is a square d upon 2d multiplied by displacement is d. d से d कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, so it is ma square multiplied by d small d upon 2. Answer. This is the work done by all forces. पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्रियाशील हैं, उनके द्वारा सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्कन है, टोटल वर्कन और पार्टिकल के द्वारा W all is equal to ma square into d by small d by 2. Answer. Here in RHS a small a is a constant. So alternately using second method we have also solved this problem. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel. It is CompleteSolutions.